Rahim. Our today's topic is time value of money. Value of money changes as time pass on. However, the inflation and interest rate are also the main factors that causes to change in the value of the money over time. अच्छा, हम कहते हैं कि जी वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है जैसे वक्त गुजरता है, लेकिन इसके साथ साथ दो अहम फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज होती है. ये मेन फैक्टर्स हैं. देर आर मैनी अदर फैक्टर्स दैट काज टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द मनी, जिसको हम जो है लेटर ऑन अपने टॉपिक्स में डिस्कस करते जाएंगे. बेसिकली इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट इज़ द प्राइस पेड और रिसीव्ड ऑन द यूजेज ऑफ मनी. अगर हम मनी इस्तेमाल करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स को अमाउंट देता है, लैंड करता है, तो जो बारोअर है वो उस लैंडिंग अमाउंट के अगेंस्ट उसको जो है वो एक एक्सेस प्राइस पे करेगा और वही चीज़ जो है वो इंटरेस्ट कहलाती है. अच्छा, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने कहा है कि जी मिस्टर लैंडर इज़ गोइंग टू पे 10,000, गिव्स 10,000 टू मिस्टर बारोअर फॉर 2 months. After 2 months, Mr. Barber will pay back to the lender 12,000. Here it's very simple, that 10,000 is the principal amount and the borrower will return to Mr. Lender rupees 12,000, which means that he will return back 10,000 principal and the price on usage of money, and the price is called and that price is called interest. इंटरेस्ट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 components. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक और बात को क्लियर कर दूं कि जो लैंडर है बारवर को 10,000 दे रहा है, वो बेसिकली उसे एक अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है कि वो इसको यूज़ कर ले, और जो बारवर है वो लैंडर को पे करेगा 12,000. अच्छा, अब वो एक्सेस जो 2,000 रुपीज़ पे कर रहा है वो इसकी प्राइस पे कर रहा है. लैंडर वो रिसीव कर रहा है और बारवर वो 2,000 पे कर रहा है. यही जो रेंट है, जो प्राइस है, जो वो पे कर रहा है ऑन द यूजेज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. और हम इंटरेस्ट को इसी एक जो एक्सप्लॉयटेशन है कि पहले ही बारवर पे बर्डन है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे करेगा, फर्दर उस पर बर्डन इंक्रीज कर जाता है ऑफ रुपीज़ 2,000. तो इसलिए हम इस चीज़ को इन इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स हम रिबा को, इंटरेस्ट को जो है वो एक एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट समझते हैं. ठीक है, और इसको सख्ती से मना किया गया है कि आप किसी से जो है वो प्राइस का यूजेज जो है वो रिसीव नहीं कर सकते. ठीक है. हाउएवर, to understand this concept, we divide interest into 2 concepts. One is called simple interest and second one is called compound interest. सिंपल इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ईच टाइम ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे. और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है ईच टाइम ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. Compute the computation of a simple interest. प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारे पास 1,000 रुपया हो, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10%, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का अगर हमने कंप्यूट करना हो तो पहले साल भी हमारे पास 1,000 पे 10% अप्लाई होगा, 100 आएगा. अगले साल भी 1,000 पे 10% अप्लाई होगा, 100 इंटरेस्ट आएगा. तीसरे साल भी 1,000 पे 10% अप्लाई होगा तो भी 100 आएगा. तो सिंपल इंटरेस्ट में इन ईच ईयर ईच टाइम दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. सो फॉर 3 years the total interest amount will be 300. Total amount will be paid by the borrower after 3 years, that will be 1,000 principal amount plus 300, that will be equal to rupees 1,300. Now come upward. Let's see towards the computation of the compound interest. In compound interest, if the principal amount is rupees 1,000, interest rate is 10%. In first year, second year and third year,
the mechanism will be changed from the simple interest. Now it will be a compound interest computation. In first year, interest will be charged on principal amount 10%, that will be equal to 100. Then again this 100 will be included now in 1000 principal amount. That is the 1100 multiplied 10%, 110. And then this 110 will be included into 1100, that will be equal to 1210 multiplied 10%, that will be equal to 121. So the total amount will be 331. If we see the difference, in simple interest it was 300 and in compound interest it is 331. So total amount to be paid by the borrower, that will be 1000 principal amount and 331 rupees of the compound interest, that will be equal to 1331. So compound interest may the value, future value of money has been increased due to its compounding nature. Interest rate is called compound interest rate. We proceed further for computation of a future value of a single amount. अगर आज हमारे पास 1000 है और उसको हम कंपाउंडिंग प्रोसेस में एंगेज करते हैं, तो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ये एक सीन क्रिएट हुआ है कि 1000 को पहले साल के प्रोसेस में इंटरेस्ट चार्ज किया तो 1100, फिर दूसरे साल के सर्कल में एंटर किया तो 1210, और फिर तीसरे साल के सर्कल में जब हमने इसको एंटर किया तो अमाउंट जो है वो हमारे पास 1331 आई, जो कि फ्यूचर वैल्यू कहलाई। अब इसमें हुआ क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड 1 प्लस आई होल पावर n, or 1 plus I whole power 1 is also known as compounding element, that is known as future value interest factor for given interest rate and for given number of periods. So future value is equal to, can also be rewritten as present value multiplied future value interest factor for given interest rate. अच्छा, इसको जो टेबल्स हैं, इंटरेस्ट टेबल्स हैं, वहाँ पे भी इस वैल्यू को इंटरेस्ट फैक्टर को जाके देखा जा सकता है, जो कि एक सिंगल अमाउंट के बिहेवियर को काउंट करती है। सो 1000 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 0.1 होल पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1.331 by computing the value of the calculator. 1000 multiplied 1.331, that becomes equal to future value is equal to rupees 1331. So it was a simple mechanism that how we can compute a future value of a single amount. Thank you so much. In second lecture we will proceed for computing the future values if we use different frequencies. ओके, अब हम इस चीज को एक्सेल में भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि हम कैसे जो है वो मॉडल कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यूज को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सो वी विल कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट। अच्छा, आज हमारे पास एक अमाउंट है और उसको हम जो है वो अगर इन्वेस्ट करें या कहीं डिपॉजिट करें तो हमें उसको आफ्टर सम टाइम पीरियड उस अमाउंट पे इंटरेस्ट अगर चार्ज हो तो क्या उस अमाउंट का जो है वो फ्यूचर वैल्यू होगा। सो लेट्स सी, वी हैव ए प्रेजेंट वैल्यू टुडे, दैट इज सपोज 5000 rupees 5000, and the interest rate is per annum is 10%, and the number of periods we deposit this 5000 for 5 years,
n is equal to 5 years. Find future value. So we know that future value is equal to present value multiplied 1 plus interest rate whole power n. So we model here for computation of 1 plus I whole power n, the compounding element. So here we will use present value multiplied 1 plus interest rate, its whole power is n. We will close this function in first computation, and then it will be multiplied with other. We may fix these values. So by putting the dollar sign, 8,500, 8,052.55. तो ये हमारे पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट होगी। अगर अब हम कोई भी वैल्यू, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम 10,000 डिपॉजिट करवाएं और हमारे पास 5 सालों बाद 10% इंटरेस्ट रेट हो, तो वो 16,105। अब अगर हम डिफरेंस निकालें, इंटरेस्ट अमाउंट हम कितनी जो है वो पे कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्यूचर वैल्यू माइनस present value. So we can compute. Let's see, we have our example that we have told in compound interest example. 1,000, 10% interest rate. If year is 3 years, then we have very clear that 1,331 and the interest amount is 331. Thank you so much for today's lecture.